Dear students, I am teaching you your chapter number 11 that is force and pressure. इस चैप्टर में इससे पहले हमने बात की थी कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, यानी ऐसा फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर दूरी मेंटेन है तब भी जो फोर्स लगता है इट इज़ नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी बिना कॉन्टैक्ट के ही फोर्स अप्लाई हो रहा है. देन फॉर एग्ज़ाम्पल मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ पुल, यानी अगर हम किसी मैग्नेट को यूज़ करते हैं तो वो मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है बिना किसी कॉन्टैक्ट के. तो इस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. Some typical non-contact forces are, first, magnetic force. You know very well that a magnet attracts nails or pins made from iron even from some distance. We are talking about non-contact forces. About magnetic force, the force exerted by a magnet is known as magnetic force. You are able to look in the diagrams. Magnets move away from each other. This is known as repulsion when like poles are in front of each other, and attraction when unlike poles are in front of each other. Magnets move towards each other when poles are opposite, and magnets repel each other when two poles are similar. Okay, so that was magnetic force. Now we are going to talk about electrostatic force. This is electrostatic force. The force exerted by an electrified body is called electrostatic force. ये कॉम्ब है. कॉम्ब को अगर हम अपने हेयर के ऊपर कुछ सेकंड्स के लिए रब करते हैं, उसके बाद पेपर के कुछ एक पीसेस को हम उससे टच कराते हैं, तो पेपर के जो पीस होते हैं वो कॉम्ब की ओर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. Now I am going to teach you about gravitational force. What is this gravitational force? You know very well that जब भी हम कोई भी चीज़ छोड़ते हैं अपने हाथों से तो वो हमेशा नीचे की ओर, ग्राउंड की ओर बहुत ही तेज़ी के साथ जाती है. ओके, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू बुक्स, between a book and a table, between you and your friend, between earth and moon, etc. These are known as gravitational force. You are able to look in a diagram. Now talk about units of force. Various units of forces are, first we will discuss about SI unit.
SI unit of force is Newton. It is denoted by letter N. लेटर कैपिटल N से हम इसको डिनोट करते हैं. And some other units that is used to describing force are kilogram force and gram force. Kilogram force, the force required to lift a body of mass 1 kg vertically is called 1 kilogram force, and the force required to lift a body of mass 1 gram vertically is called 1 gram force. And 1 kilogram force is equal to 1000 gram force, and it is denoted by, gram force is denoted by small gf, and kilogram force is denoted by kgf. Now look at resultant force. What is this? In many situations, more than one forces act on a body at the same time. All these forces collectively produce the same effect in the body as if a single force is acting on the body. Such a single force is called the resultant force. Okay? तो क्या है resultant force? The single force which acts on a body to produce the same effect in it as done by all the forces collectively is called the resultant force. When two forces act along the same line but in opposite direction, then क्या होगा? Let's consider. अगर इन दोनों बच्चों का जो फोर्स है वो टू डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो क्या होगा? दैट विल बी स्लो. और इफ these forces are equal, then it could not move this kite. This is because when two forces act along the same line in opposite direction, the resultant force is equal to the difference of the two forces. Okay? able to watch. टू अपोजिट डायरेक्शन में जब टू फोर्सेस लग रहे होते हैं तो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो ज़ीरो हो जाएगा, और इसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि वो जो भी चीज़ है जिस पे ये अपोजिट डायरेक्शन में टू फोर्सेस लग रहे हैं, इफ़ द टू फोर्सेस आर ऑफ इक्वल अमाउंट, देन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी ज़ीरो, एंड जो भी चीज़ होगी वो मूव नहीं कर पाएगी. ओके.
The rest part of the chapter I will discuss with you in my next video.